बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we are going to install Oracle FX 21.1 and ORDS 21.4 with database 12c release 2 in Windows 10 InshaAllah quickly। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से Oracle FX 21.1 और ORDS 21.4 को डेटाबेस 12c रिलीज 2 के साथ विंडोज 10 में इंस्टॉल किया जाता है जल्दी से। So first we will create a folder in C drive with the name 12c r2 underscore 21.1। सबसे पहले हम C drive के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे 12c r2 underscore 21.1 के नाम का, और इस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर बनाएंगे DB और ORDS के नाम के। And under this folder we further create two folders with the name DB and ORDS respectively. Extract database 12c release 2 in DB folder which we have just created। अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे Oracle database 12c release 2 को उस फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है इन DB फोल्डर, DB के फोल्डर के अंदर। Extract ORDS 21.1 folder in ORDS folder which we have just created, so we do not need to copy and paste ORDS folder। अब हम ORDS 21.4 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे ORDS के फोल्डर के अंदर जो हमने अभी बनाया है। तो हमें ORDS के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The downloadable link of ORDS 21.4 is available. However, we have already downloaded ORDS 21.4 का downloadable link जो है वो मौजूद है, अलबत्ता हम उसको पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। Download Apex 21.1 in 12cr2 underscore 21.1 folder, so we do not need to copy and paste Apex folder। अब हम Apex 21.1 के फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करेंगे 12cr2 underscore 21.1 के फोल्डर के अंदर। तो हमें Apex के फोल्डर को कॉपी करके उसको चस्पा करना नहीं पड़ेगा। The Java version which we are using is Java 8 update 211। जो Java का वर्जन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो Java 8 update 211 है। Run database setup with administrator rights। अब हम डेटाबेस का सेटअप चलाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स से। I do not wish to receive security updates, so I will uncheck this option at next button। मैं सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं लेना चाहता तो मैं इस ऑप्शन को अनचेक करूँगा और नेक्स्ट का बटन दबाऊँगा। Option will be create and configure a database, hit next button। ऑप्शन create and configure a database करेगा, next का बटन दबाएं। Option will be desktop class, hit next button। ऑप्शन desktop class रहेगा, next का बटन दबाएं। Option will be use Windows built-in account, you can use other option as well, hit next button। use Windows built-in account का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई दूसरा ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, next का बटन दबाएं। Now define Oracle base till DB folder while hitting browse button। अब हम ब्राउज का बटन दबा के इंस्टॉलेशन का पता देंगे DB के फोल्डर तक का। Define global database name, password, confirm password from your choice। Uncheck create as container database option, hit next button। ग्लोबल डेटाबेस नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, कंफर्म पासवर्ड देंगे अपनी मर्जी से। क्रिएट एज कंटेनर डेटाबेस के ऑप्शन को अनचेक करेंगे और नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। हिट इंस्टॉल बटन, इंस्टॉल का बटन दबा दें।
Oracle Database 12c Release 2 has installed. Hit close button. Oracle Database 12c Release 2 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. क्लोज का बटन दबा दें. Open command prompt and reach where Apex folder is available. कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, वहां जाएंगे जहां Apex का फोल्डर मौजूद है और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे. When we reach there, run this command. Connect with sys/sysdba. कनेक्ट होंगे sys/sysdba से. SGA मैक्सिमम साइज पता करेंगे. शो पैरामीटर SGA की कमांड चला के अगर वो 3000 MB से कम हुआ तो हम उसको बढ़ाएंगे. Check SGA maximum size by running show parameter SGA command. If it is less than 3000 MB, then we have to increase it. Now we have to shut down database by running shut immediate command. अब हम database को बंद करेंगे shut immediate की कमांड चला के. Now we have to start database by running startup command. अब हम database को start करेंगे startup की कमांड चला के. Now we will check SGA maximum size again in order to make sure the changes we did has reflected. अब हम SGA maximum size दोबारा पता करेंगे ताकि तसल्ली कर लें कि जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. नहीं तो जो तब्दीली हमने की है वो हो चुकी है. The changes we did has reflected. Now we will install Apex by running this command. अब हम Apex को इंस्टॉल करेंगे ये कमांड चला के. Oracle Apex 21.1 has installed. Oracle Apex 21.1 जो है वो इंस्टॉल हो चुका है. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. User will be admin. Provide email and password from your choice. यूजर जो है वो एडमिन रहेगा. ईमेल और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से दे दें. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Now we will run this command. अब हम ये कमांड चलाएंगे. Provide password for Apex listener and Apex REST public user, which will be Oracle in lowercase. Apex listener और Apex REST public user को पासवर्ड देंगे जो कि Oracle होगा छोटे हरफों में. Exit this command prompt. इस command prompt को बंद कर दें. Open new command prompt with administrator rights. नया command prompt खोलेंगे administrator के rights से. वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर मौजूद है और वहां जाने के बाद ये कमांड चलाएंगे. And when we reach there, run this command. Now we will provide a configuration path where we want to configure ORDS. अब हम configuration का पता देंगे जहाँ पे हम ORDS को configure करना चाहते हैं. Enter. 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 If your port is 1521, then hit enter. If your port is different, then define your port and hit enter button. अगर आपकी पोर्ट 1521 है तो आप एंटर का बटन दबा दें. अगर आपकी पोर्ट मुख्तलिफ है तो आप पहले अपनी पोर्ट लिखें और फिर एंटर का बटन दबाएं.
ऑप्शन विल बी 2, ऑप्शन जो है वो 2 रहेगा। प्रोवाइड योर सेट, अपने सेट दे दे। एंटर, एंटर। Provide password and confirm password for ORDS public user which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें ORDS पब्लिक यूजर को जो कि Oracle होगा छोटे हरफों में। To find your port, navigate to Oracle or RDB 12 home 1, expand it। अपनी पोर्ट पता करने के लिए Oracle और RDB 12 home 1 में आए, इसको फैला लें। नेट मैनेजर पे आए, इसको खोलें। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम विल बी सिस, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम जो है वो सिस रहेगा। प्रोवाइड पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दे दें। एंटर, 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 एंटर। एंटर, एंटर। Provide password for Apex, provide password and confirm password for Apex public user which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे Apex पब्लिक यूजर को जो कि Oracle होगा छोटे हरफों में। Enter, provide password and confirm password for Apex listener and Apex rest public user which will be Oracle in lowercase। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देंगे Apex listener और Apex rest public user को जो कि Oracle होगा छोटे हरफों में। Enter। Now copy images folder from the Apex installation folder। अब कॉपी करेंगे इमेजेस के फोल्डर को Apex के इंस्टॉलेशन फोल्डर में से और उसको चस्पा करेंगे यहाँ and paste it to this path। Enter। Now we will provide a path to Apex static resource location till images folder। अब हम Apex static resource location को पता देंगे images के फोल्डर तक का। Enter। Provide port from your choice or leave it as it is। आप पोर्ट दे दें अपनी मर्जी से या इसको ऐसे ही रहने दें। When Oracle REST data services initialize appear, we can access Oracle Apex 21.1। Do not close this command prompt because if it closed for any reason, we cannot access Oracle Apex 21.1, but we can reopen it as well। इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद मत करिएगा क्योंकि अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाएगा तो हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता हम इसको दोबारा खोल सकते हैं। जब Oracle REST data services initialize appear लिखा हुआ आएगा तब हम Oracle Apex 21.1 को इस्तेमाल कर सकेंगे। ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स। कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से, वहां जाएंगे जहां ORDS का फोल्डर अवेलेबल है। ORDS folder is available and when we reach there run this command। जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो फिर हम ये कमांड चलाएंगे। Oracle Apex 21.1 and ORDS 21.4 with database 12c release 2 has installed in Windows 10। Oracle Apex 21.1 और ORDS 21.4 database 12c release 2 के साथ Windows 10 में इंस्टॉल हो चुका है।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।